हाय एवरीवन। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऑफ चैलेंजिंग। ये जो क्वेश्चन है उतना अंडर चैलेंजिंग रूल कंसीडर नहीं कर सकते। कंपेरेटिवली इट इज क्वाइट सिमिलर। क्वेश्चन इज हियर, so don't make me repeat more and more times. Every time हर बार रिपीट नहीं करूंगा। जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा, आप लोग वीडियो देख रहे हो, just pause the video, take the question, take the figure, then resume the video and listen the explanation part. So here the question is in figure angle B is equal to 90 degree. तो यहाँ quadrilateral ABCD एक्चुअली उस quadrilateral में एक एंगल है 90 डिग्री का। दूसरा जो AD स्क्वायर एक साइड का स्क्वायर quadrilateral का एक वन साइड स्क्वायर is equal to sum of squares of remaining sides, that is AB square plus BC square plus CD square. Simple thing, a quadrilateral in which one angle is 90 degree. One more thing is given, one side square of a quadrilateral is equal to sum of squares of remaining three. बताना क्या है? एंगल ACD 90 डिग्री बताना है। ये पार्ट कंस्ट्रक्शन पार्ट है, ठीक है। जो रेड लाइन में आपको दिखाई दे रहा है ज्वाइन किया वाला AC एक्चुअली वो नहीं है, क्योंकि अगर ACD की अगर जब जिक्र आती है तो आपको AC ज्वाइन करना होगा, ठीक है। सो ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करने ऐसा तो है नहीं, सिंपल थिंग 90 डिग्री का एक एंगल क्वाड्रिलेटरल ये ज्वाइन करने के बाद आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। बस अगर आपके पास सामने सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बाकी ये तो किसी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा अभी तो, ठीक है। सो अगर सामने राइट एंगल ट्रायंगल है, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, so here first let us take join AC। थोड़ा सा हर बार जीवन पार्ट अगर लिख के करते हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जीवन टू प्रूफ नॉट एवरी टाइम चलता है। ट्रैफिक बिजनेस में आपको लिखना पड़ेगा कि गिवन है, वंस यू जॉइन AC। नाउ वन मोर थिंग इज गिवन, उसके बाद में देखते हैं इन ट्रायंगल ABC angle B is equal to 90. Therefore, AC square is equal to AB square plus BC square. Is by Pythagoras theorem. इसको इक्वेशन 1 लेके छोड़ो। एग्जैक्टली देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ पे भी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डायरेक्टली अपने को AC स्क्वायर का रिप्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। नाउ यूज द गिवन पार्ट। ये AD स्क्वायर is equal to AB square plus BC square plus CD square. It is given AD square is equal to AB square plus BC square का रिप्लेसमेंट है डायरेक्टली AC plus CD square। पता नहीं क्या है, देखते हैं। It should be a Pythagorean triplet definitely। AD square, here is AD square is equal to AC square plus CD square. मिल गया। Here what you got right now, the square of one side of a triangle is equal to sum of squares of remaining two sides. If it is so, the given triangle is a right angle triangle. And which is the longest side here? AD is the longest side and the angle opposite to that side is right angle. That means AD के लिए opposite का angle कौन सा है? AC। Clear है? So y converse of Pythagoras theorem triangle ACD is right angle triangle. Right angle ACD is equal to 90. Exactly यही प्रूव करना है हमें। angle ACD is equal to 90. Clear है? Simple one. Compared to the other questions. Okay. Bye bye. Take care.